what is the best outcome that we can have as far as environment. You will be able to predict what is going to happen in the next COP. This is my guarantee to you. इस लेवल पे क्लाइमेट चेंज समझ जाएंगे कि अगले COP में क्या होने वाला है वो भी आप बता दो. Every single species that has come in the news with its frequency and the articles corresponding from that sheet are written here, and I'll give you this document. Let's look at the role of previous year questions here. Let's talk about environment, and we'll have this short orientation session to talk about how we are going to cover. Okay, before I start off, I'll just say a couple of things. I am fairly aware that you guys are in a lot of stress at the moment. ठीक है, ये इस टाइम पे हाई है, मुझे पता है, right? This is definitely there. I understand this is there. I also understand that किसी का कम किसी का ज्यादा, but some or the other backlog would also be there. हो सकता है उसका actual impact उतना ज्यादा ना हो, but you guys would be feeling a lot of backlog at the moment कि यार वो रह गया है, वहां पे वो रह गया. इस टाइम पे ये sentiment बहुत ज्यादा common है. So I also understand that this is something you guys are feeling at the moment कि यार अच्छा backlog रहता है, ये subject वहां से cover नहीं किया, वो test नहीं दिया, etc etc. छोटी मोटी चीजें होती हैं, इनका final impact बहुत कम होता है, but हमें इस टाइम पे इसका stress. Am I correct in assuming that both of these things are true? That यार छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, बैकलॉग है, स्ट्रेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई एम श्योर इवन दैट इज समथिंग दैट यू गाइज आर फीलिंग एट द मोमेंट, राइट? बिकॉज सिंस आई हैव बीन थ्रू दिस माई सेल्फ, आई 100% अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग दैट यू वुड ऑल्सो फील, राइट? हाउएवर वी विल इंश्योर कि ये प्रॉब्लम आए ना, बिकॉज नाउ दिस इज द लास्ट सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट वी हैव टू रीड, राइट? अब एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो subject that we have to read. Other than this, the other subjects we have covered. CSAT is the other thing that we have to do. ठीक है, तो अब यहाँ पर बेस्ट आउटकम हम एनवायरमेंट में कैसे निकाल सकते हैं? What is the best outcome that we can have as far as environment is concerned? एनवायरमेंट का बेस्ट आउटकम हम ऐसे निकाल सकते हैं कि आप 4:30 मेरे साथ बैठो, and by 10 PM, by the time you are sleeping, 4:30 to 7:30 के आसपास क्लास, 2 घंटे या 1 घंटे आपका खुद का रिवीजन टाइम. बाय 10 PM यू एटलीस्ट नो कि अच्छा ये नए सब्जेक्ट के कोई बैकलॉग्स एक्सेट्रा क्रिएट नहीं हो रहे हैं, राइट? दिस इज द बेस्ट आउटकम वी कैन क्रिएट, दैट हम रोज बैठे 4:30 टुगेदर एंड वी स्टडी द क्लास टुगेदर, एंड आफ्टर 4:30 let's say till 7:30 the class goes on, then we do some questions etc. Then by 10 PM you do your own revision, and 10 PM तक आपको पता हो यार कि एटलीस्ट एनवायरमेंट में तो मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट? आई एम ऑल्सो फेयरली कॉग्निसेंट ऑफ दिस फैक्ट. तो जैसे जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे थे, वी कुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, राइट? हम बहुत डिटेल में जा रहे थे, कुछ नहीं समझ आ रहा था तो 2-2 बार भी कर सकते थे. यहाँ एक तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें हैं नहीं, राइट, दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट? एंड द सेकंड थिंग इज दैट आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट इस टाइम पे इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट वी कवर, राइट, एंड वी इंश्योर दैट एवरीथिंग गेट्स कवर्ड एंड वी रिमेंबर इट, ताकि यहां पर अब ये ना हो कि एनवायरमेंट भी रिवाइज करना है. तो इफेक्टिवली इट इज माय जॉब A टू हैव मैक्सिमम कवरेज, B टू फिनिश ऑन टाइम, एंड C टू टेल यू दैट ओके जो भी आपकी रिवीजन है मैं यहीं पे आपको करा दूंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बाकी चीजों की टेंशन लो. फेयर इनफ, दिस इज ऑल्सो अग्रीड. अब I can see this thing that a lot of you are saying कि take class at 9 AM. मैंने इस बारे में भी सोचा actually, and you can tell me if I'm thinking right or wrong. कुछ fix नहीं है. If you want, we can change it also. The only thing is, PRP में इस टाइम पे 2 चीजें होंगी. सुबह CSAT होगा और शाम को we will have environment, right? ये उल्टा भी कर सकते थे हम, but मुझे लगा यार कि I mean this might be my bias since I'm a doctor and I'm weak at maths, right? यार इस चीज को ना इग्नोर करने की टेंडेंसी बहुत हाई है. देयर इज अ वेरी हाई टेंडेंसी टू इग्नोर दिस एंड देन क्रिएट टेंशन टुवर्ड्स द एंड. तो सीसैट को एक सब्जेक्ट की तरह लो. सुबह उठने के टाइम पे यू नो योर ब्रेन इज आल्सो मोर फ्रेश टू प्रोसेस मैथ्स. आई फाइंड मैथ्स फेयरली डिफिकल्ट, सो योर ब्रेन इज आल्सो मोर फ्रेश एट द मोमेंट. सो मैंने यही सोच के सीसैट मॉर्निंग में रखा है आप लोगों के लिए कि आप सुबह उठो, 2 घंटे की क्लास अटेंड कर लो 9 बजे की मुदत सर के साथ, राइट? एंड आई विल आल्सो आस्क हिम, आई विल रिक्वेस्ट हिम टू कीप द क्लास टू 2 hours ओनली. कि सीसैट की आपकी 2 घंटे की क्लास हो, आप 11 मैक्सिमम 12 बजे तक. आई विल जस्ट आल्सो चेक व्हाट शेड्यूल वी फाइनलाइज. जस्ट गिव मी अ सेकंड. या सो इट्स गोइंग टू स्टार्ट एट 10 AM. सीसैट इज गोइंग टू स्टार्ट एट 10 AM. तो वी विल जस्ट इंश्योर कि वो 12 बजे तक खत्म हो जाए. सो बाय 12 noon यू आर एब्सोल्युटली फ्री. आई हैव आल्सो आस्क्ड हिम एंड रिक्वेस्टेड हिम टू इंश्योर दैट आपको इस क्लास में भी क्लास के बाद कोई बहुत ज्यादा होमवर्क ना करना पड़े. So you are able to, you know, finish what you have to with regards to CSAT. You spend these 2 hours in the morning. It will give you a good, schedule after waking up also. कि अच्छा,
I've spent 2 hours, I've done my CSAT thing in the morning, and then from 12 till let's say 4:30 you are absolutely free to revise whatever you have to. 4:30 you just show up here. Environment मैं आपको इस लेवल पे रिवाइज करा दूंगा कि अगर यहाँ पे आप बस क्लास अटेंड कर लो लाइव मेरे साथ and you participate in all the things that I asked you to participate in, it's not going to be a problem. I hope even this is clear. See, since we have to look at things in totality, not just environment, this is the idea. Yeah, देखो, if you keep commenting, please take class at 9 AM. I mean, ठीक है, this is then my decision. ये बात मान लो. Sometimes you will also agree. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी CSAT की क्लास 4:30 बजे हुई, राइट, आप अटेंड नहीं करोगे ढंग से. I know this for a fact. आप मान लो मेरी बात, प्लीज रिक्वेस्ट मान लो मेरी, just agree to this request. मेरे को भी बेटर लगता है सुबह क्लास लेके. So you will also understand everybody is at their maximum capacity in the morning, right? It's also easier for me to take a class in the morning. If I tell you internal discussions, internally I also wanted to take the class in the morning, but this makes much more sense for you, right? मुझे नहीं तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है यार सुबह क्लास लेने में, मेरे को तो ऑफिस आना ही है ना. But the fact is that this makes more sense for you. That is why we are putting it this way. I hope this is clear and understood. Now we'll move on. अब इस पे और डिस्कशन नहीं करते, since time is something that is anyway at a premium at the moment. Okay. अब agenda तो you guys know. Again, just rush through this. 2-3 चीजें आपको दिखानी है. पहले let's look at this. This is prelims के syllabus का exact screenshot. General issues on environmental ecology. What does this mean? Ecosystem, basics of environment. That's what it means, right? सबसे पहले ये है. Then बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज. तो बायोडाइवर्सिटी को एक एरिया में डालते हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं अबाउट स्पीशीज. आई विल जस्ट शो यू द एफर्ट दैट हैज गॉन इनटू बिल्डिंग दिस एनवायरनमेंट कोर्स राइट नाउ. तो यू विल अंडरस्टैंड कि आप यहाँ जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को कि यार कोई भी रैंडम स्पीशीज पूछ ली, कोई भी रैंडम नेशनल पार्क पूछ लिया, कहां से पूछ रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है, राइट? यू हैव दिस सेंटिमेंट राइट अबाउट एनवायरनमेंट के कहां से क्वेश्चन आ गया यार, ये तो कोई भी स्पीशीज पूछ लेते हैं, यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दैट माइट बी ट्रू, बट हमारे साइड से जो हम बेस्ट कर सकते हैं, that we are going to do here. That also I'll show you, right? Then let's talk about climate change. This I will make you understand to a level that you will be able to predict what is going to happen in the next COP. This is my guarantee to you. इस लेवल पे climate change समझ जाएंगे कि अगले COP में क्या होने वाला है वो भी आप बता दोगे, right? That do not require subject specialization. ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है. पहला झूठ है कि all optionals are equal. दूसरा झूठ ये है it does not require subject specialization. It absolutely requires subject specialization. When we see the questions, we'll understand that, right? This is anyway not a paper of general studies. It is a paper of specific studies. ठीक है. अब थोड़ी सी आपको मेहनत दिखाता हूं जो हमने करी है. ये प्रॉब्लम तो सबको होगी. आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पहले अटेम्प्ट दिया होगा. आई एम श्योर आप लोगों ने you've done your own analysis also. I am sure all of you would have had this problem कि यार एनवायरनमेंट में ये जो स्पीशीज आते हैं और ये जो नेशनल पार्क आ जाते हैं, कोई भी कुछ भी पूछ लेते हैं, स्पेशली जो इकोलॉजी वाला पार्ट है, कुछ भी पूछ रहे हैं, राइट? यू मस्ट हैव फेल्ट दिस फीलिंग. तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. ठीक है, लेट्स गेट डाउन टू द इशू कि इसको अब सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूं, सो दैट यू आल्सो हैव कॉन्फिडेंस एंड यू आल्सो नो हाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू बी बिल्ट. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस. ये हैं एनवायरनमेंट के जितने भी आर्टिकल्स अपीयर हुए हैं इन द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट. तो लेट मी जस्ट जूम इन हियर अ लिटिल बिट. तो ये देखो, यहां पर सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के आर्टिकल्स हैं. जैसे ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया, एनिमल रेस्क्यू फैसिलिटी, सेक्रेड ग्रोव्स, चीतास, सेक्रेड ग्रोव्स. देख लो रिपीट. तो सेक्रेड ग्रोव्स इस बार लाइकली हो गया. आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज विजिबल टू यू और नॉट, बट आई एम रीडिंग इट. ये वो सारे आर्टिकल्स हैं जो आज तक अपीयर हुए हैं फ्रॉम लाइक जून ऑफ लास्ट ईयर टिल मार्च 15th of this year. All those articles are here and all of this has been read and covered in the notes, so also not something you need to worry about, right? ये सारे आर्टिकल्स हैं. 600 आर्टिकल्स हमें टोटल मिले इस टाइप के. सो ऑल these 600 आर्टिकल्स आर हियर. ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पे हैं विद अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओके व्हाट सब्जेक्ट व्हाट इज कमिंग. बायोडाइवर्सिटी में लेपर्ड के बारे में काफी न्यूज आई है, लायंस के बारे में न्यूज आई है. सो वी ए नो व्हाट स्पीशीज हैव बीन कवर्ड इन द न्यूज. सेकंड में आपको थोड़ा और, लेट मी शो यू हाउ टेक कैन मेक आवर स्टडीज बेटर. तो ये डॉक्यूमेंट देखो आप. दिस वी आर डूइंग टू इंश्योर कि वो रैंडमनेस खत्म हो. दिस इज अ हीट मैप एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग दैट हैज अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर इन द लास्ट 1 year.
टाइगर्स पे 25 आर्टिकल्स आए हैं इस टाइप के, right? 25 times tigers have been mentioned. These are the articles that have come with respect to tigers. So we now know tiger is very important for this year. And in articles को पढ़ के हमें उसमें commonality भी मिल जाएगी. You know, these are the things that are mostly being asked. Dolphins पे 5 बार article आया है न्यूज में. These are the articles and what has come and how many times it has come for every species. तो हम देखें डॉल्फिन्स 5 times, ऑलिव रिडली टर्टल्स 4 times, घड़ियाल ओनली वंस, चीतास 13 times. तो अब स्पीशीज तो हम सारे पढ़ेंगे, वील रीड एवरी सिंगल स्पीशीज, बट नाउ आई नो दैट टाइगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीता इज सेकंड लेवल इंपॉर्टेंट, ऑलिव रिडली टर्टल एंड डॉल्फिन्स आर लेट्स से थर्ड लेवल इंपॉर्टेंट, lions are not as important as cheetahs, so we'll study accordingly and in as much detail. जैसे Asian elephants पे 13 articles have come, that means Asian elephant I have to now understand in detail, but मिथुन पे एक ही article आया, so even if I just know broadly about it, that thing is solved. तो यहाँ पर सारी चीजें, every single species that has come in the news with its frequency and the articles corresponding from that sheet are written here, and I'll give you this document. I'll give you that document also, I'll give you this document also. अगर आपको खुद भी देखना हो, वैसे क्यों ही देख रहे हो, because I am doing this job, but even if you want to cross verify etc, all of this is available to you, not something that we need to worry about. ठीक है. Then कौन कौन से नेशनल पार्क्स न्यूज में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व थ्राइस इन द न्यूज, सेक्रेड ग्रोव्स 4 times, ग्रेट निकोबार आइलैंड 7 times इन द न्यूज. तो ऑब्वियसली अब यहां पर जो नेशनल पार्क्स हैं निकोबार में, दे बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर्स. एवरी सिंगल नेशनल पार्क, कॉर्बेट पे एक आर्टिकल आया है, तीस्ता रिवर पे 3 आर्टिकल्स आए, अरावली पे 3 आर्टिकल्स आए, तो दीज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर्स. तो ये हीट मैपिंग भी हमने कर ली है, सो वी नो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट. सिमिलरली फॉर एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस इन एनवायरनमेंट. ये भी हम पूरी डिटेल में उनके कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ेंगे, बट अगेन we'll know what has appeared how many times. For example, Forest Rights Act has appeared once, right? GRAP has appeared 4 times. So if GRAP has appeared 4 times, then of course GRAP is more important, right? National Green Tribunal has appeared 3 times, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हो. CBAM has come 4 times. CBAM तो वैसे भी हमें डिटेल में देखना है, right? So it has come 4 times, very likely it will be asked, etc, etc. Then this is a complete summary of current affairs on the basis of article headlines. एक ब्रॉड समरी की क्या क्या हुआ है क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में, पॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में. दिस इज ओनली टेकन फ्रॉम हेडलाइंस. हेडलाइंस से लेके एक समरी जनरेट करिए कि क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा हुई हैं न्यूज में. दोस आर द थिंग्स वी नीड टू फोकस ऑन. फॉर एग्जांपल, वाटर पॉल्यूशन बीइंग अ क्रिटिकल इशू, तो वाटर पॉल्यूशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक पॉल्यूशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, राइट? बायोडाइवर्सिटी पे क्या क्या हुआ है, टाइगर सबसे ऊपर लिखा है, एलिफेंट सेकंड लिखा है. सो दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी हीट मैप के हिसाब से और आर्टिकल्स की headlines लेके the summary has been generated, so it has come from that standpoint, right? So that also we know. तो current affairs में कुछ छोड़ेंगे नहीं. अब इसके बाद भी देखो अगर मिस हो गया, right? इसके बाद भी they ask something that we are not, covering. तो let's assume with certainty कि किसी को नहीं आता होगा, unless किसी का तुक्का ही लग जाए तो अलग बात है, but इतना हमने कवर कर लिया तो you would also understand that if we are covering this much, it should not be a problem further, right? I hope that is also clear. बिकॉज इससे ऊपर कुछ करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है यार 15 डेज में, एंड मे बी नेक्स्ट ईयर आई विल इंप्रूव अ लिटिल बिट. अभी तो दिस इज व्हाट आई कुड डू टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी टू एंश्योर कि आपका कुछ मिस ना हो. दैट इज हियर, दैट इज सॉर्टेड. अब एनवायरमेंट में क्वेश्चंस ये पहले भी बात हो चुकी है, बट विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग एक्चुअली इन एनवायरमेंट? द नंबर इज समवेयर अराउंड 18. नाउ द नंबर माइट बी 18, बट हाउ मेनी ऑफ दीज आर सॉल्वेबल? Right? How many of these are solvable is the question. कितने solve हो सकते हैं इसमें से? It is my opinion that at least 10 of these are solvable. 8 जो बचे हैं उनका हम कुछ भी कर लें, कुछ खास, there's not a lot of things we can do about it. But let's analyze this further. Let's analyze this number further. अगर overall हम देखें, let me write all the subjects. Polity is generally giving us 10 questions. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा. Economy is giving us about 15. Science and tech is giving us about 10 questions. Environment is giving us, let's say, about 18, right? IR gives us some 5 questions, right? Then geography gives us about 15. Modern history will give us around 5. Ancient medieval art and culture will give us somewhere close to 10. And then some current affairs questions will be left, right? मान लेते हैं ये distribution है. Maybe polity will also be a little bit higher at 15. Right, but
I'm not adding this in my head, so हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, but please bear with me. This is broadly what I think it would be, right? Broadly, I am assuming that this is what it would look like in the end. So this is 30, देख रहे हो maths में weak, 45, 60, 75, and yeah, we're broadly close. So some, yeah, so maybe 7 questions in current affairs, etc. Right? So this would mean 100. Let's assume this is the distribution, 10% ऊपर नीचे मान लेते हैं. Out of the things that are written, देखते हैं how many we are supposed to target, given कि prelims वैसा ही आता है जैसा हर बार आता है. Something very special does not happen this time. Polity में 15 में you would also agree that out of these 15, generally 10 plus are solvable. Economy में भी 10 plus are solvable. Science and tech में at least we have now come to a position that if you've read science and tech with me, even you would agree that okay, 5 plus are solvable. Economy में हम 10 plus solvable रखते हैं, यहाँ पर 2 plus रखते हैं. Geography में again let's keep 10. Modern history में I'll say 2. Ancient medieval में I'll say 5. Current affairs मान लेते हैं, हम कर ही नहीं पाएंगे, right? Because let's say current affairs or random or whatever. So this distribution also leads us to say that okay, these are more than 50 questions. These are actually, again, weak maths is being displayed. These are more than 50, right? These are 54, as I can add on the screen behind me, right? So ये 54 questions हैं, and this is what I have seen over time, कि around 50-52 questions solvable होते हैं. इसके अलावा जो questions होते हैं उसमें यहाँ पर आप थोड़ी silly mistakes करोगे, नॉन सॉल्वेबल वालों में आप थोड़ी सी लॉजिकल गेसिंग करोगे, एंड बात बराबर सी बनती है. बेसिकली हमें 54 नेट करेक्ट चाहिए, हमारा स्कोर 100 के ऊपर आ जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव. आई एम श्योर यू वुड अग्री सो फार. या I will put an assumption here that this you have achieved now, this you have achieved now, this also you have achieved, this also you would have achieved now reading with Varun sir. I saw that yesterday you guys were also doing a lot of previous year questions, तो आपको उसमें भी लगा होगा. This is also something we have achieved. This we generally achieve by reading spectrum. This might be a bit dicey because इसमें guarantee नहीं है, ये 10 out of 10 भी unsolvable हो सकते हैं, but then फिर हो सकता है current affairs में भी कुछ ऐसा आ जाए जो हमें आता हो, right? So is this something that you are with me? Like so far you are agreeing to what I'm saying? ठीक है. So the idea is that we now have to achieve this. अब ये हमें अचीव करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. 18 में से 10 हमें निकालने हैं, राइट? एंड basically even this number might be not very appropriate. What I'm trying to say here is हमें इतना आना चाहिए कि हमारे से ज्यादा किसी को ना आता हो, कि अगर हमसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, वी कैन से विद, जैसे अब साइंस एंड टेक में आप लोग मान जाओगे कि अगर कोई ऐसी चीज आ गई जो आपने सुनी ही नहीं हुई है, या इकोनॉमी में कोई ऐसी चीज आ गई जो आज तक सुनी ही नहीं है, कंसेप्ट सुना ही नहीं है कि ये क्या होता है, तो यू कैन बी श्योर कि यार बाकी भी किसी को नहीं आता होगा. Similarly with science and tech, I'm pretty sure that you guys can say that okay, if there's something that I've not even heard of before, तो किसी को नहीं आता होगा, वो मैंने उस लेवल पे साइंस एंड टेक अब पढ़ लिया है. सेम चीज हम एनवायरनमेंट में अचीव करने की कोशिश करेंगे. दैट इज द आइडिया बिहाइंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. सो दीज आर 18 क्वेश्चंस. दिस इज द वेटेज दैट इट हैज बीन असाइन्ड, बट इन 18 क्वेश्चंस में आवर टारगेट इज समवेयर क्लोज टू 10. ओके, ट्रेंड देख लेते हैं. इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, दिस इज द बिगेस्ट syllabus head. But over time it has been reducing. ये trends 2015 onwards हैं, last 10 years के हैं. Earlier a lot of questions used to come on basic ecosystem things, basic ecology, what is ecotone, what is edge effect, etc, etc. Now alpha, beta and gamma biodiversity, for example, now those things are generally slightly reduced, but yes, this is something that we have to cover anyway. This is becoming more and more important by the minute. Conventions, organizations and climate change, ये हम डिटेल में समझेंगे. यहां पर बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इज गेटिंग मोर इंपॉर्टेंट. दिस इज आल्सो समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. लॉज एंड पॉलिसीज, दीज आर जनरली द मोस्ट सॉल्वेबल क्वेश्चंस. सबसे ज्यादा सॉल्वेबल ये होते हैं. अगर हम कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे लॉ क्यों आ रहा है, कैसे आया है, तो दिस विल एनीवे नॉट बी अ प्रॉब्लम. देन पोल्यूशन इज जनरली अनसॉल्वेबल बिकॉज वो कोई ऐसा पोल्यूटेंट देते हैं जो हमने सुना नहीं होता. ऑल्दो वील कवर ऑल द करंट अफेयर्स, वील स्टिल ट्राई टू कवर as much as we can, but यहाँ पर generally थोड़े से unsolvable questions मिलते हैं. And renewable energy is generally solvable. This is usually very doable. इसका question अगर मैं आपको सारे questions भी दिखाऊंगा, they're all fairly doable. Now, अब PYQs का रोल देखते हैं, because again PYQs is something we'll be doing in class.
तो मेरी पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है दैट जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट फ्रॉम सैटरडे 4:30 to 10 इज माय टाइम विद यू, ठीक है। 4:30 to 10 के टाइम में आप मेरे साथ बैठो और एनवायरनमेंट कवर कर लो। आई विल इंश्योर कि आपको याद हो जाए, ठीक है। मतलब हो सकता है मैं क्लास थोड़ी लंबी करूं, बट मैं पढ़ाऊंगा ज्यादा नहीं। जो लंबी क्लास होगी वो इसी चीज के लिए होगी कि आपको यहीं बैठ के याद हो जाए, राइट। सो इट विल बी माय जॉब टू इंश्योर कि आपको जो भी आप इन दिनों में पढ़ो आपका कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो। यू जस्ट गिव मी दिस कमिटमेंट दैट यू विल शो अप फॉर 14 डेज, 14 डेज प्रॉब्ली, शो अप फॉर 14 डेज ऑन 4:30 एवरी सिंगल डे विद मी। आप 4:30 मेरे साथ बैठोगे, जितना भी लंबा बैठना पड़ा आप बैठोगे। आप तो बैठे हो, मैं तो खड़ा हुआ हूं, राइट। इट्स ऑल्सो physically tiring to keep standing for such a long time, but I will, right? And I will ensure कि आपको ये याद हो जाए, right? This is the sentiment we'll carry over the next 14 days. Now let's look at the role of previous year questions here. तो अगर हम role of previous year questions देखें तो ये देखो, यहाँ पर महासीर fish के बारे में पूछा था, and again in 2022, which is not a bird, and महासीर was the option. So PYQs are not directly repeated, but you'll see a lot of thematic repetitions in environment. So here you have a question about the RLC, etc., and then again a thematic repetition of drying up of lakes being asked again in 2022. National park which has tropical, subtropical, temperate, Arctic, everything. Cut to here, national park completely in temperate alpine zone. So mapping and national park related question. यहाँ पर हमें करना क्या है? What do we need to do here? We need to know every single national park in the country and where it's located. वो mnemonics के साथ याद कराना मेरी responsibility. By the end of this course, you will have a map like this. Let me just show you. Yeah, you will have a map like this, जिसमें इंडिया के सारे नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा सब कुछ नेम्ड है. Let me just zoom out. अभी आपको थोड़ा सा डरावना लगेगा ये मैप, इतनी मार्किंग्स हैं इस मैप पे, but we'll do all of it together. राइट, हम इसको साथ में बैठ के बनाएंगे. सारी रिवर्स को बनाएंगे, सारी रिवर्स के आसपास जो जो नेशनल पार्क्स हैं उनको बनाएंगे, और यहाँ पर स्पीशीज भी लिखें. तो जैसे ये गंगा जी का मैप है, एज यू कैन सी ये गंगा जी है. गंगा जी में यहाँ पे गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स एंड दे आर एंडेंजर्ड, घड़ियाल दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गैंजेस शार्क दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गोल्डन महासीर व्हिच इज एंडेंजर्ड. इसी पे क्वेश्चन पूछा था. फिर यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे रामगंगा रिवर है, रामगंगा फ्लोइंग थ्रू कॉर्बेट. कॉर्बेट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क एंड द फर्स्ट टाइगर रिजर्व हैविंग द लार्जेस्ट टाइगर डेंसिटी इन द वर्ल्ड. शायद आपसे पढ़ा ना जा रहा हो, बट व्हेन वील डू इन क्लास वील जूम इन. मैं अपने आईपैड पे आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज आपको विजिबल होगी. ठीक है, सो दिस इज समथिंग आल्सो दैट इज सॉर्टेड. राइट, ये भी आपको आई होप देख के एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ रहा हो दैट यस इवन मैपिंग विल बी कवर्ड एंड वील ड्रॉ दिस मैप टुगेदर. एक बार 3 घंटे लगाएंगे सिर्फ इस मैप को साथ में बनाने में. ठीक है, मजा आता है उस दिन. दैट इज माय फेवरेट क्लास ऑफ द एंटायर ईयर, जब हम वो काम करते हैं. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं कुछ भी कर लूं यहाँ पे, कुछ भी कट ऑफ नहीं बढ़ता. यार एक बात बताओ, सबके पास है ना लक्ष्मीकांत? लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरीबडी नोज क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत से आ रहे हैं, तो कट ऑफ बढ़ गया क्या? लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्या? वेरी फ्यू पीपल विल फॉलो थ्रू ऑन दिस एडवाइस. निशा, मतलब बहुत कम लोग फॉलो करेंगे इस एडवाइस को, जो मैं आपको कह रहा हूं कि 4:30 आओ और मेरे साथ बैठो, और लंबी क्लास होगी तो भी बैठे रहो, साथ में एफर्ट मारते हैं, याद करते हैं. हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक विल एक्चुअली फॉलो थ्रू ऑन दिस? अगर इतना ही होता कि पीपल वुड फॉलो थ्रू ऑन एडवाइस दैट टीचर्स गिव, तो कट ऑफ 90 नहीं होता, कट ऑफ एटलीस्ट 110 होता. राइट, तो डोंट, ये थॉट ही लाना दिमाग में खराब है. जैसे अभी फाउंडेशन बैच में किसी से बात हो रही थी, तो दे वर सेइंग, आई हैड एन ओरिएंटेशन सेशन, सो दे वर सेइंग कि सर इफ द कंटेंट इज सेम वी विल ऑल राइट सिमिलर आंसर्स. ये बातें आप लोगों ने भी की होंगी जब आपने हमारे साथ फाउंडेशन बैच लास्ट ईयर शुरू किया होगा, बट नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट ऐसा तो नहीं है. दैट इवन इफ एवरीबडी हैज सिमिलर आंसर्स और सिमिलर कंटेंट, द आंसर्स डोंट कम आउट सिमिलर. सिमिलर थिंग हैपेंस हियर. राइट, एनवायरमेंट में काफी सारी लिंकेजेस हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ लिंकेजेस दैट वी हैव टू डू विद एनवायरमेंट. फॉर एग्जांपल, एनवायरमेंट इज लिंक्ड विद ज्योग्राफी एज फार एज क्लाइमेटिक जोन्स, नेचुरल वेजिटेशन, डिजास्टर हॉटस्पॉट्स आर कंसर्न्ड. एनवायरमेंट इज आल्सो लिंक्ड टू पॉलिटी विद रिगार्ड्स टू एनवायरमेंटल एक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है वगैरह वगैरह. दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर लिखा नहीं है, बट एनवायरमेंट इज आल्सो लिंक्ड टू IR. वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ एंड हाउ दे आर नेगोशिएटिंग डिफरेंटली. And that will make us understand what the global climate change negotiations have been all about. कि COP29 में ऐसा क्या हो गया, COP28 में ऐसा क्या हो गया that was different to the rest of the world. Right? There's also the discussion on science and tech here, because when we read pollution control technologies, renewable energy, etc., so those things will also come. तो science and tech से जो हमारा reference है, वो भी यहाँ पर आएगा. Right? Now,
एनवायरनमेंट में कई बार क्वेश्चंस देख के हमें लगता है कि क्वेश्चंस रैंडम है. पहले क्या होता था, यूपीएससी डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछ लेता था. दैट अर्लियर दे वुड फॉर एग्जांपल डायरेक्टली आस्क व्हाट इज पायनियर स्पीशीज, व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन, व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन. अब क्या हो रहा है, दे आर आस्किंग द कॉन्सेप्ट but in sort of a latent hidden way. Latent is not a very good word to say at the moment in the country, but ठीक है, latent way में concept पूछ रहे हैं. Latent means hidden, by the way. Hidden way में question पूछ रहे हैं कि in nature which of the following is most likely to be found surviving on a surface without soil. Now this is actually a question on pioneer species and primary succession, but यहाँ पर आपको देख के ये बात mention नहीं मिलेगी. Similarly, I'll show you a couple of more examples of this. For example, unique relationship with an insect and co-evolved with it. This is actually a question of co-evolution, a concept that we'll read in the starting of ecology and environment. ये question co-evolution का है, it's just been put this way. Similarly, species are well known as cultivators of fungi. They might have asked cultivators of fungi और आपको लग रहा है ये क्या पूछ लिया, but the question is on mutualism, right? तो concepts को काफी ज्यादा लिंक करके अब they are asking the application of these concepts. So we have to understand these concepts in detail, and we also have to keep in mind कि इनके examples याद रखने बहुत जरूरी हैं. कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम mutualism तो हमने पढ़ लिया, yes I understand what mutualism is, but I don't understand how or I don't try to remember the examples of it, but the questions have now sort of started to come on the examples of the concepts rather than the concepts themselves. तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे इस चीज का. Then current affairs की अप्रोच हम देख चुके हैं. We've done a heat map of all the current affairs, तो वो भी प्रॉब्लम हमें नहीं रहेगी. That document of current affairs heat map I will give to you. Don't need to worry about it anyway. अब अप्रोच हमारी क्या रहेगी? We will start with ecology and ecosystem. So we'll start with basics of ecology. इस पे अब उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आते भी हैं तो एग्जांपल से आते हैं, but we can't skip this, right? Then we'll read about basic concepts of biodiversity. Once these two things are done, then we'll move on to legislations, because legislations have been made to protect these things. तो जब हमें समझ आएगा, right? For example, why is ecotone very important, or why is linking of tiger reserves very important? Then we'll move on to legislations of, let's say, a tiger corridor is being made. Once we've understood the legislations कि इंडिया में सब चीजें वर्क क्या कैसे करती हैं, where is a national park or how is a biodiversity hotspot different from a national park, different from a tiger reserve, different from a Ramsar site, etc. जब हमें ये सारी टर्म्स समझ आ जाएंगी, then we'll move on to drawing this map together and draw all the species together on that map. तो हमारा एजेंडा यहाँ पर क्या रहेगा कि एक मैप पे इंडिया की सारी रिवर्स. अब अगर हम लोकेशनली देख रहे हैं तो क्लाइमेट जोन्स तो आपको पता ही है, आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो. दैट वे यू कैन ऑल्सो मैप इट टू क्लाइमेट जोन्स. तो हम रिवर्स सारी मैप की ड्रॉ करेंगे. वील पुट एवरी सिंगल नेशनल पार्क ऑन द मैप. We'll put every single Ramsar site that has been in the news on the map. We'll put important, even other important wildlife reserves, for example, on the map, and then we'll also put all the species on that one map. तो अभी आपको एंड में वो मैप ऐसा बड़ा populated सा दिख रहा होगा, but the idea would be that we actually draw it together step by step ताकि हमें वो याद रहे, and ultimately वही हम याद रखेंगे. ठीक है. After this is done, this will complete our first part of environment, which is a major part. Then we'll come on to understand climate change and conventions and the role of international relations in that. Then we'll move on to pollution. Pollution would largely be current affairs based on whatever articles have appeared in the newspapers. We'll then move on to sustainable development. Sustainable development में world क्या कर रहा है, India क्या कर रहा है, etc. etc. And then finally to renewable energy. Here we'll also understand nuclear energy. जैसे आपको याद होगा साइंस एंड टेक में हमने न्यूक्लियर फिशन नहीं पढ़ा है, तो this is something we'll do here once we've understood all of this concept. Because इस बार, for example, there have been certain amendments in the budget. Legislations have been amended with regards to nuclear energy to allow the entry of private sector into nuclear energy sector. एक और बहुत important चीज with regards to nuclear energy came in this year's budget. Can any one of you tell me कि nuclear energy से related और क्या चीज थी बजट में? वेरी गुड, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. नाउ व्हाट सोर्सेस टू फॉलो? है ना, वेरी गुड क्वेश्चन. आंसर इज सिंपल. प्लीज और कुछ मत पढ़ना, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं. जनरली इट इज ऑपोजिट. टीचर्स वुड जनरली कम एंड टेल यू कि ओ रीड दिस बुक आल्सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सिंस यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, सिंस द प्रीलिम्स इज इन 2 months, आई वुड रिक्वेस्ट यू to just read the notes only, right? सिर्फ ये पढ़ लेना और कुछ मत पढ़ना, ठीक है?
और यहां मेरा काम यही है कि आपको यहीं पे याद करा दूंगा. जस्ट रीड द नोट्स हियर. इफ यू आर नॉट इन द कोर्स विद मी, व्हाट आई विल डू इज आई विल इंश्योर कि आप these notes, जो लोग कोर्स में नहीं है, although all of you are, but जो लोग नहीं हैं उनके लिए भी I'll put these notes out, right? कि at least notes वो पढ़ लें, right? So that's also sorted. जैसे आप लोग भी कभी मान लो लेक्चर नहीं देख पाए तो नोट्स ही पढ़ना प्लीज. Although to understand what is in those notes, of course you'd like to, it would be better if you see the lecture. Let's put it like that. अब ये हमारा शेड्यूल है. We'll start on Saturday, like I told you. We'll start with basics of ecology. Basics of ecology में हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और हम 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर्स कवर करने होते हैं, वो भी यहीं कवर कर लेंगे. अगेन संडे नो क्लास, सो मंडे से अगेन बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी. We'll continue like this. So Tuesday, Wednesday, Thursday, this same schedule, 4:30 p.m. Biodiversity, acts and bodies, mapping ये 2 क्लास हम मैपिंग की लेंगे साथ में. Then we'll move on to species. Then we'll move on to climate change, international conventions part 2. This is what we'll do together. Then Indian initiatives with regards to climate change. Then we'll do sustainable development, renewable energy and pollution. The idea is 20th को खत्म करेंगे. 20th is Sunday, I know, but 20th is anyway the last day that we had put for ourselves कि 20th को सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए. 20th we'll finish it together. ठीक है, 20th तक यही idea है कि 20th तक हम इसको खत्म कर लेंगे, right? So this is the idea. I'm already telling you that one of these days next week I might not be available because there is some function which I can't skip. Right, घर के function है, मैंने बहुत request कर लिया मम्मी को, but I can't skip. So what we'll do is, it's most likely on Wednesday. It's most likely on Wednesday. This should, by the way, this should be 4th, not 1. So just this is April only. It's most likely on Wednesday. Just अगर ये Wednesday को मैं यहाँ पर नहीं हुआ available, we'll shift it one day and we'll take a class on Sunday. ठीक है? But we will finish by 20th. That is the sentiment I'm trying to give you. कुछ भी हो जाए 20th तक खत्म कर लेंगे. All right. Now, class methodology you already know, right? We will do all the PYQs together. We'll focus on conceptual clarity. I don't want to repeat this. आप लोगों ने मेरे से पहले पढ़ा हुआ है, तो I know you also know by now how I teach. रटने का कुछ नहीं रखेंगे. अब species को मैं आपको याद नहीं करा सकता logically. वो चीज आपको रटनी पड़ेगी. But other than that, it's nothing that you will have to, mug up. At least as far as the things that are logical. For example, legislations are made in a logical way, or international negotiations are done in a logical way. Renewable technologies are made in a logical way. That we won't have to mug up. But yes, you will have to mug up कौन सा national park कहाँ पे है. उसके लिए बढ़िया mnemonics मैं आपको सुनाऊंगा. कोई मुझे जज नहीं करेगा उस दिन जब मैं वो mnemonics आपको सुनाऊंगा. But ठीक है, वो हम कर लेंगे. Now, as far as these are concerned, I have heard some concerns regarding this. Let's talk about it openly. कई लोगों ने बोला है handwritten notes को लेके that handwriting is not understandable, etc., etc. So the thing is that there are a couple of people in my team who also help me write. तो आपने देखा होगा 2 तरह की handwriting है, एक मेरी, एक किसी और की. So what we've done is now we've put it in one place, one person's responsibility, और उनकी handwriting बहुत अच्छी है. मैं आपको notes दिखा भी दूंगा. You don't worry, that handwriting problem will not come again. ठीक है, and we'll focus on remembering from here only. इसी से याद करेंगे. Now I know कई लोग कह रहे थे कि यार 1 pages कर लेते हैं, वो mind maps वाला काम कर लेते हैं. See, I don't have a problem doing that. It's actually easier. But you will come back and thank me when you will have, these to revise. यार देखो end में ना, जब last के वो 1 हफ्ता वगैरह होता है, it's much easier to read handwriting than it is to read printed material, क्योंकि आपके पास और कितना printed material होगा कवर करने के लिए. So it gives you a different feeling. I'm trying to also make them more colorful with more images, etc. ताकि आपको याद करने में आसानी हो. Right. Now, 4:30 p.m. Monday to Saturday is what we are doing. Saturday से हम start करेंगे. ये class timing है. Chat पे disclaimer आपको पता ही है that let's keep it to a minimum. आपको भी पता है कि I've never put this in any of the slides before. I'm just putting this here now. Yeah, because time कम है, right? If I get distracted, you will get distracted, right? And वो हम अभी afford नहीं कर सकते. We have to finish on 20th means we have to finish on 20th. ठीक है, so let's just ensure कि none of us get distracted. I will ensure from with the best of my ability कि मैं distract ना हूँ. लेकिन आप भी ये चीज प्लीज मुझे promise करो कि आप भी distract नहीं होंगे. ठीक है, so to the best of our ability, let's try and not get distracted at least in the next 15 days. Chat को थोड़ा सा let's just chill out there. Now these are the handwritten notes for example. तो अगर आपको पहले कोई डाउट था
कि they are not going to look good. You can take a look at this handwriting. Why is this not zooming in? आप ये handwriting भी देख सकते हो and you can see the handwritten notes that we're making. I'm sure आपको याद हो जाएंगे. I have given this responsibility now to a specific person. This is how we'll have our handwritten notes. No too many colors, put in one place and made with good images ताकि आपका मन करे उनको पढ़ने का. Fair enough. I hope now at least that concern would be sorted, right? इससे अच्छी handwriting तो I don't think हो सकती है किसी की, या हो भी सकती होगी, तो at least this is very readable, very rememberable, etc., etc. Right? ये भी sorted. I hope this is okay now. All right. That being said, I think that basically covers everything that I had to. We've basically covered everything. So I will just ask you now to go back, take a leave, go back and finish whatever backlog you have. I'll see you on Saturday, 4:30 p.m. मिलते हैं. Saturday को start करते हैं, and the schedule that's written, that is what we'll follow, right? So we'll just finish that here, and I'll see you now on Saturday. ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंजर्व करते हैं, आपका भी मेरा भी, and in this course at least for the next 15 days let's keep this mindset only that we'll focus and do whatever is essential, because I know आप पे बहुत और stress भी है. ठीक है, so I'll see you and I'll talk to you now on Saturday at 4:30. Bye bye.